अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपका पहला लेक्चर मेडिसिन का दूंगी और उसका मैंने सोचा कि डिजीज़ेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक आज एस्थमा है, जो बहुत ही कॉमन क्रॉनिक कंडीशन है और वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम देखते हैं, ये आप स्लाइड्स देखिए। Now, what is asthma? Asthma is a syndrome characterized by airflow obstruction that varies markedly both spontaneously and with treatment. Asthmatics harbor special type of inflammation in the airways that make them more responsive than non-asthmatics to a wide range of triggers, leading to excessive narrowing with consequent reduced airflow and symptomatic wheezing and dyspnea. Narrowing of the airway is usually reversible, but in some patients with chronic asthma, there may be element of irreversible airflow obstruction. So today we are going to discuss this asthma, which is very common chronic inflammatory condition of the airway, and it leads to hyper-responsiveness of the airway. And those persons who have got genetic predisposition for this hypersensitivity, they develop this asthma. Now let us see what is the prevalence. Asthma is one of the most common chronic disease globally and currently affects approximately 300 million people worldwide. तो ये इतना common है. Risk factors and triggers. Asthma is heterogeneous disease with interplay between genetic and environmental factors. There are several risk factors for asthma. These are distinguished from triggers, which are the environmental factors that worsen asthma. मतलब बहुत सारे उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है पेशेंट्स में, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो एक उनका इंटरप्ले होता है जिसकी वजह से एस्थमा डेवलप होता है. अब नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर एस्थमा. एटोपी इज द major risk factor. Atopic rhinitis, atopic dermatitis, eczema, they are all concerned with the atopy. And what is atopy? Atopy is due to genetically determined production of a specific IgE antibody, with many patients showing a family history of allergic diseases. Some other genetic and environmental factors predispose to the development of asthma in atopic individuals. Now, let's see that there are many people in population who have got this atopy, which is genetically determined, and they have got specific family history of atopic diseases like eczema, allergic rhinitis, asthma, but all of these people do not develop asthma. The genes for atopy are the same, but these people, it has been observed that all of them do not develop asthma. So it gives us an idea that there is some interplay with the environmental factors which combine with these genes, and they result in the development of asthma, right? So asthma is polygenic. Polymorphism of gene on chromosome 5q, including T helper cells 2, Th2, we will denote with Th2 in our slides, cells, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 9 and interleukin 13, which are associated with atopy. So all of these patients who have these genes, they do not develop asthma, but they have, some people have interaction with some environmental antigens that we call allergen, and then they develop asthma. So there is an increasing evidence for a complex interaction between genetic polymorphism and environmental factors. Up triggers, what are the triggers? They are different from the risk factors, which can give sudden episode of asthma. They are known as triggers. The allergens that lead to sensitizations or are proteins that have protease activity, and the commonest allergens are derived from these allergens are derived from number 1, house dust mites, cat or dog fur, cockroaches, grass and tree pollens, and rodents. And all
also the other triggers are upper respiratory viral infections, exercise and hyperventilation, cold air and fog, drugs which consist of beta blockers and aspirin, stress, and irritants, house sprays, paint, fumes, sulfur dioxide, and irritant gases. So all of these triggers can lead to sudden development of asthma episode, severe breathlessness. Now, there is a variety of asthma which is known as intrinsic asthma. Some non-atopic individuals have late onset of the disease, which is known as adult onset asthma, which is called intrinsic asthma. So some people are non-atopic, means that they have no allergic disease, they have no genetic history or family history, but still they develop in later life, they develop asthma, and which is known as intrinsic asthma. Now, pathogenesis is very important to understand, otherwise you will not understand what is the mechanism of drugs that we give to relieve breathlessness of asthma. So, pathogenesis, asthma is associated with specific chronic inflammation of the lower airways. The airway mucosa is infiltrated with activated eosinophils and T lymphocytes, and there is activation of mucosal mast cells. A characteristic finding is thickening of the basement membrane due to subepithelial collagen deposition as eosinophils release fibrogenic factors. Airway wall is edematous and epithelial cells are friable and reduced attachments, so shed in the lumen. Now, in this diagram you can see that there is epithelium of the airway is shown, and this epithelium you can see it is attracting. Allergen has come into the epithelium, mast cells, they are activated, and they when they bind with these allergens, they bind with the antibodies IgE, they degranulate and they produce inflammatory mediators, and they produce all the effects of asthma. There may be occlusion of the airway lumens with mucus plaques from goblet cells and plasma proteins from leaky bronchial vessels. There is vasodilation and angiogenesis. The airways are narrowed, reddened, and edematous. Now, if you know the all the mechanism of inflammation, then same thing is happening in the airways, and these airways, they become edematous, and their cells form more mucus, and mucus plaque are obstructing the airways, and there is contraction of the smooth muscles in the airway, which lead to the narrowing, and it results in severe breathlessness. Now, you can see in this diagram that allergens, sensitizers, and viruses and air pollutants all lead to inflammation, chronic eosinophilic bronchitis, because one of the major cells that cause inflammation is eosinophil in the airway. So, it leads to airway hyperresponsiveness, and triggers are allergens, exercise, cold air, sulfur dioxide, particulate matter, and symptoms we will later discuss: cough, wheeze, chest tightness, and dyspnea. Now, allergens, inhaled allergens activate cells, mast cells with bound IgE antibody, directly leading to increased eosinophil and neutrophils mediate release of bronchoconstrictor mediators. There is airway edema and an acute inflammatory response. So, what happens when the allergen enters? It activates the mast cells. Mast cells are bound with IgE antibodies, and as a result of this, the mast cell degranulate and they release inflammatory mediators, which cause the inflammation of the mucosa of the airways, and it leads to occlusion of the airways and asthmatic attack. Now, airway inflammation of respiratory mucosa from trachea to terminal bronchioles, predominance in the bronchi that are the cartilaginous airways. Airway inflammation associated with airway hyperresponsiveness, which is correlated with variable airflow obstruction. There is chronic inflammation in most asthmatics with superimposed acute inflammation that corresponds with the acute exacerbation of asthma. Now, this inflammation is chronic. It is present in the airways, but when upon chronic there is superimposed acute inflammation, then it leads to
acute exacerbation of asthmatic attack. Now, in this diagram you can see this is histology, histopathology of small airway in fatal asthma. Now, you see that after the normal parenchymal attachment, there is thickening of the smooth muscle, airway smooth muscle, then thickened basement membrane, then inflammatory cell infiltrate in the submucosal layer, then goblet cell hyperplasia, goblet cell prepare mucus, so hypersecretion of mucus occurs, mucus plug with trapped inflammatory cells. When mucus plugs occlude the small airways and patient feels chest tightness and there is very much difficulty to expectorate that mucus plug or sputum. Now, let us see what are the inflammatory cells in the asthma. When we observe that first most important inflammatory cell in asthma are mast cells. Now, let us discuss about the mast cells. Mast cells are present in the airway epithelium, and when they are exposed to allergens, they become activated and they bind with IgE antibody, that is antibody which is produced in allergies, and when this IgE antibody is bound with mast cells, they degranulate and they release inflammatory mediator, and the most important inflammatory mediator from the mast cell is histamine and prostaglandins, which are potent bronchoconstrictors for the airways. Now, next cell is macrophages and dendritic cells. Now, macrophages are derived from circulating monocytes and they are attracted towards the airway epithelium with the allergens, and they also produce inflammatory mediators, but their role is not well known because macrophages actually also produce anti-inflammatory mediators. So, their function is not very much known in asthma, but the dendritic cells are very important. Dendritic cells are specialized macrophage like cells, and these cells, when they take up allergen, they convert them into peptides, and these peptides, then these dendritic cells, they present to the lymph nodes, in the lymph nodes to the uncommitted T lymphocytes. They present these allergens to the T lymphocytes, and then T lymphocytes then produce cytokines which activate T cells, Th2 cells they activate, and which result in attraction of eosinophils. And normally the non-asthmatic people, they have helper T cells one in their epithelium, but they trigger the formation of T helper cells 2 types which promote inflammation by the T lymphocytes. Now, third one are eosinophils. Eosinophils are the main cells of allergy, and they are attracted by the cytokines that are produced by the T lymphocytes, and they come to the airways and they are recruited, and then they release their mediators and they cause inflammation. Then number 4, neutrophils. Neutrophils are also attracted towards the inflamed mucosa, but it is seen that in acute severe asthma, neutrophils are seen in the airways. Then we have got most important cells of asthma, the T lymphocytes. T lymphocytes trigger the formation or differentiation of T helper cells 2 types. T helper cells 2 instead of T helper cells 1, which then releases many cytokines and chemokines and promote inflammation in the airways. Then structural cells, they are very important. Structural cells are epithelial cells, fibroblast and airway smooth muscle cells. Now, these structural cells, they are much more than the inflammatory cells. So, their function is very important in inflammation because they are releasing chemokines, cytokines and fibroblast, because chronic inflammation and repair is going on simultaneously. So, there is thickening of the
basement membrane of the airway epithelium. Now, what are the inflammatory mediators? As I have told you, they are histamine, prostaglandin D2, cysteine leukotrienes. Effects are they contract airway smooth muscles, they increase microvascular leakage, they increase airway mucus secretion, and attach other inflammatory cells. So, it results in airway constriction. Cytokines, multiple cytokines regulate the chronic inflammation of asthma. Th2 cytokine are interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13. They mediate allergic inflammation. Pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis alpha and interleukin 1 beta amplify inflammatory response. Now, oxidative stress, activated inflammatory cells such as macrophages and eosinophil produce oxygen species. Increased nitric oxide is produced by NO synthase in the airway, which causes bronchial vasodilation. Inflammation and repair proceed simultaneously in asthmatics. Now, airway epithelial shedding is a major contributing factor for airway hyperresponsiveness due to epithelial disruptions, so that with this epithelial shedding, there is subepithelial nerves which are exposed, and they secrete acetylcholine, which also constrict airways. Fibrosis in all asthmatics, airway epithelium is thickened due to subepithelial fibrosis with deposition of type 2 and 5 collagen with eosinophil infiltration, because eosinophil is releasing these fibrosis. Airway smooth muscles, there is hypertrophy and hyperplasia of airway smooth muscles by various growth factors such as platelet derived growth factor or endothelin 1 released from inflammatory or epithelial cells. The inflammatory mediators modulate the ion channels that serve to regulate the resting membrane potential of airway smooth muscle cells, thus altering the level of excitability of these cells. Vascular responses, there is increased airway mucosal blood flow in asthma which may contribute to airway narrowing. There is angiogenesis by vascular endothelial growth factor, microvascular leakage from the postcapillary venules by inflammatory mediators resulting in airway edema and exudation into the airway lumen. So, these are so many responses, vascular responses that lead to airway obstruction. Mucus hypersecretion, increased mucus secretion contribute to viscid mucus plugs that occlude the airway. There is hyperplasia of epithelial goblet cells, interleukin 13 induces mucus secretion. So, mucus secretion is more, patient is unable to expectorate that viscid mucus out of the airway. Neural regulation, various defects in the autonomic neural control contribute to airway hyperresponsiveness in the asthma. Cholinergic pathways through the release of acetylcholine acting on muscarinic receptors cause bronchoconstriction. Inflammatory mediators may activate sensory nerves resulting in reflex cholinergic bronchoconstriction. Airway remodeling, structural changes are produced in the airways of the asthmatic which may lead to irreversible narrowing of the airways. So, you can understand that if this inflammation is not stopped or it is not combated with the therapy, whatever is the treatment, then this airway remodeling produces irreversible narrowing. Initially, the asthma people, their characteristic differentiation feature is that this airway narrowing is reversible through bronchodilators, then it will be irreversible in the long term. Now, physiology, you can see that spirometry in asthma people or patients, there is decrease in forced expiratory volume in 1 second, marked decrease, and there is also decrease in forced expiratory volume in 1 second and its ratio with the forced vital capacity than the normal people, and there is peak expiratory flow is also decreased and residual volume is increased in lung function test or spirometry if it can do to diagnose asthma. Now, what are the clinical features? There will be, patient will be complaining of wheezing, number 2 dyspnea, number 3 coughing, number 4 chest tightness, symptoms worse at night and patients typically awake in the early hours of morning.
Number 5, increased tenacious mucus that is difficult to expectorate. There will be the symptoms and physical signs. Typical signs are inspiratory and to a greater extent expiratory bronchi throughout the chest, and there may be hyperinflation of the lungs. So with the stethoscope you can hear these are bronchi which are produced due to the bronchoconstriction. Some patients present with non-productive cough variant asthma. There are no abnormal physical findings when asthma is under control. If you check the patient, there will be nothing wrong on his or her physical examination. How will you diagnose? The diagnosis of asthma is usually apparent from the symptoms of variable intermittent airway obstruction, but it is usually confirmed by objective measurement of the lung function test that I have told you. You will advise lung function test. Then you will see that peak expiratory flow will be decreased. There will be a decrease in the forced expiratory volume in 1 second and forced expiratory volume in 1 second, and its ratio with forced vital capacity will be decreased and residual volume will be increased. There will be airway hyperresponsiveness, but this we do not check. Usually we do not ask for this test. But we can do reversibility test along with the lung function test, because we check the patient's peak expiratory flow and forced expiratory volume in 1 second, and after that we give inhalation of bronchodilator, and after 15 minutes we again measure if there is 200 ml increase in the peak expiratory flow in 1 second, then it means that this was reversible airway obstruction. Okay, number 3, you can advise for hematological test. Number 4, imaging. You will ask for a chest X-ray, and it can show hyperinflation or the no other abnormality. Number 5, skin prick test. We do not usually do because it has got it is with the injection of some allergens like dust mite or whatever, and it has a danger of anaphylaxis, so we do not advise it for the diagnosis. Now differential diagnosis: upper airway obstruction by tumor or laryngeal edema, left ventricular failure. In left ventricular failure, when you will auscultate the patient's chest, it will give you crepitations. There will be increased JVP and other signs of heart failure. So 3, eosinophilic pneumonitis, then systemic vasculitis including Shrug-Strauss syndrome and polyarteritis nodosa, and number 5 is chronic obstructive airway disease. And you can easily differentiate it with the history. Plus, when you will advise lung function test, they will show in asthma reversibility of airways, and in chronic obstructive airway disease irreversibility of the airways. That is the one differentiating point. Now, before treatment, we comes to what is the aim of the treatment. Now, aim of treatment is minimal. Ideally, no chronic symptoms including nocturnal. Number 2, minimal or infrequent exacerbations. Number 3, no emergency visits. यानी कि पेशेंट बार बार अगर इमरजेंसी में जा रहा है, उसको एस्थमा के अटैक हो रहे हैं, तो उसका मतलब है उसका तो एस्थमा बिल्कुल भी सही कंट्रोल नहीं है. नंबर 4, मिनिमल, आइडियली नो यूज़ ऑफ रिक्वायर्ड बीटा 2 एगोनिस्ट. जो अभी हम देखेंगे जो रेस्क्यू इनहेलर है वो बिल्कुल मिनिमल हो या ले ही ना, उसकी नौबत ही ना आए. ये होता है कंट्रोल्ड एस्थमा. नंबर 5, peak expiratory flow circadian variation less than 20%. Number 6, near normal peak expiratory flow. Number 7, minimal or no adverse effects from medication. जाहिर है कि अगर बार बार वेंटोलिन इनहेलर कोई ले रहा है तो उसको तो फिर पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया ये सब कुछ हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अब ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा में जो हमारी ड्रग्स हैं वो हैं, एक तो है ब्रोंकोडाइलेटर्स which give rapid relief of symptoms from relaxation of bronchial smooth muscle. उनका काम ये है. Number 2, controllers
विच इनहिबिट अंडरलाइंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जो सारा मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो रहा है उसमें, उस सबको वो सप्रेस करता है कंट्रोलर। तो उससे कोई फौरी फ़ायदा नहीं होगा पेशेंट को, ठीक है। उसे समझाना पड़ेगा कि भाई आपने ये लेना है, अगर उसकी नौबत आ रही है तो आपने लेना है, इससे फ़ौरन फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर लेते रहेंगे तो फिर उसका बहुत फ़ायदा है। तो पहले हम ब्रोंकोडायलेटर्स देख लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं, जो ब्रोंकाई को फ़ौरन डायलेट करते हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव हैं ये। उसमें एक होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको हम SABA कहते हैं, सच एज सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटैलिन, जो सेल्बो के नाम से और वेंटोलिन के नाम से आ रहा होता है। दूसरे हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट LABA, सैलमीट्रोल एंड फॉर्मीट्रोल। फिर इनका जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है शॉर्ट एक्टिंग का, तो वो फ़ौरन रिलीफ देंगे पेशेंट को। लॉन्ग एक्टिंग का भी है लेकिन उसका 12 घंटे तक इफेक्ट रहता है, और शॉर्ट एक्टिंग का बस सिर्फ 6 घंटे तक होता है। नंबर 2 एंटीकोलिनर्जिक्स, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सच एज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, क्योंकि हमने देखा था कि जो नर्व्स हैं जो एक्सपोज होती हैं और एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एपिथेलियल शेडिंग होती है, तो नीचे से नर्व्स जो एक्सपोज होती हैं वो क्या बना रही होती हैं, एस्टाइलकोलिन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। एस्टाइलकोलिन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करती है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक देंगे तो उसको कॉम्बैट करेंगे। नंबर 3 थियोफाइलिन, थियोफाइलिन इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्टेरेज इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्स गिविंग ओरली एंड इंट्रावीनस अमाइनोफाइलिन वाज यूज्ड इन द पास्ट, अब तो हम नहीं करते हैं, पहले दिया करते थे, ठीक है। थियोफाइलिन अब भी ओरल हम देते हैं, लेकिन वो सीवियर एस्थमा और उसमें फिर हमें थियोफाइलिन के लेवल ब्लड में देखने होते हैं। कंट्रोलर थेरेपीज, तो इनहेल्ड कंट्रोलर थेरेपीज जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, जिनको हम ICS कह रहे हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल एंड देयर एक्टिवेशन इन द एयरवेज। ICS reduce the eosinophils in the airways and sputum and number of activated T lymphocytes and mast cells in the mucosa। जाहिर है कि सारे कल्प्रिट सेल तो यही हैं, यही बना रहे हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, इसी की वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रही है। तो ये आप अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे वो सब सप्रेस कर देगा और इन्फ्लेमेशन जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। These effects account for reduction in airway hyper responsiveness। नंबर 2 सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी गिवन इंट्रावीनसली, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन है, मिथाइल पेडनिसोलोन है, फॉर एक्यूट सीवियर एस्थमा, एंड ओरली 30 to 40 milligram once daily dose for 5 to 10 days for acute exacerbation of asthma। मतलब शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जा सकता है एक्सेसरबेशन अगर सीवियर हो जाए एस्थमा की तो, ठीक है। और एक्यूट सीवियर एस्थमा में हम इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। अब 3 है एंटील्यूकोट्राइंस। अब एंटील्यूकोट्राइंस क्यों है, जाहिर है कि जब आपको पैथोजेनेसिस पता है, आपको पता है मास्ट सेल्स जब जी ग्रेनुलेट होते हैं तो सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइंस बनाते हैं। ल्यूकोट्राइंस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर हैं। अब हमने उसको कॉम्बैट करना है, तो ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जो एंटी ल्यूकोट्राइन की तरह एक्ट करती हैं। तो सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइंस आर पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, bronchoconstrictor, cause microvascular leakage and increase eosinophilic inflammation through activation of LT1 cysteinyl receptors. These leukotrienes are produced by mast cells and eosinophils in the asthma। तो 2 तरह के एंटी ल्यूकोट्राइंस हैं, एक का नाम है मोंटेलुकास और दूसरे का नाम है जाफिरलुकास, ठीक है। यूजफुल एज एड ऑन थेरेपी, एड ऑन थेरेपी हम कर सकते हैं, इसमें लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर इनहेल्ड हम दे रहे हैं तो उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, बट दे आर लेस इफेक्टिव देन लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर्स। गिवन अगर देते हैं तो हम 1 या 2 दफ़ा दिन में दे सकते हैं। क्रोमोन्स भी जो हैं पहले हम इस्तेमाल करते थे, अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, नई नई ड्रग्स आ गई हैं। क्रोमोलिन, सोडियम और नीडोक्रोमिल, दे इनहिबिट मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स ही से तो सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो उसी को भी इनहिबिट कर देते हैं। एंड सेंसरी नर्व एक्टिवेशन एंड देयरफॉर इफेक्टिव इन ट्रिगर इंड्यूस्ड एस्थमा सच एज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। यानी कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में और चाइल्डहुड एस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए पहले ये दिया जाता था, लेकिन अब ICS जो है inhaled corticosteroids, it is preferable। तो they have little benefit in long term control due to short duration of action and multiple doses by inhalation, 4 दफ़ा अगर देना पड़े तो इसकी वजह से, और low doses of ICS are far preferable than chromos, so that is why we do not give it। अब
पांचवा देखिए ट्रीटमेंट क्या है, एंटी आईजीई। अब जाहिर है आईजीई एंटीबॉडी ही तो है जो सब कुछ कर रही है, वही मास्ट सेल से कंबाइन करती है, वही डिग्रेनुलेट कराती है, उसी से मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं, वही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो फिर अब ये एक नई डेवलपमेंट थी कि एंटी आईजीई ड्रग बना दी जाए, उसका नाम है ओमालिजुमैब। ठीक है, ये एक नई ड्रग है। Omalizumab is a blocking antibody that neutralizes circulating IgE without binding to cell-bound IgE, thus inhibits IgE-mediated reaction. तो जो भी IgE-mediated reactions हैं वो सब उसको रोक देगी. It reduces the exacerbation, but it is very expensive drug. It can be given to selected patients who are not controlled by maximum inhaler therapy, or it is given subcutaneously every 2 to 4 weeks. ठीक है, अब एक सिक्स्थ ऑप्शन हमारे पास इम्यूनोथेरेपी का भी होता है। स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी यूजिंग इंजेक्टेड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पॉलेंस और हाउस डस्ट माइट हैज नॉट बीन वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एस्थमा एंड मे कॉज एनाफाइलैक्सिस। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस ऑफ क्लिनिकल एफिकेसी। तो इसको हम इम्यूनोथेरेपी को तो हम रिकमेंड भी नहीं करते हैं। फ्यूचर थेरेपीज़, अब देखें अगर आपने सारा उसका पैथोजेनेसिस आपकी समझ में आई हुई है तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि क्या क्या फ्यूचर थेरेपी हो सकती है। तो एक फ्यूचर थेरेपी जिसके ऊपर काम हो रहा है अभी दुनिया में, एंटागोनिस्ट ऑफ कीमोकाइन रिसेप्टर्स, particularly CCR3 are in development and may be more effective. Number 2, novel anti-inflammatory treatment that are in clinical development, including inhibitors of phosphodiesterase 4, NF-κB and P38 MAP kinase. फिर है एक ऑप्शन इम्यूनोथेरेपी यूजिंग टी सेल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स ऑफ एलर्जेंस और डीएनए वैक्सीनेशन। ये भी एक बहुत ही कोई नॉवल ट्रीटमेंट होगा। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स सच एज CpG oligonucleotide that stimulate T helper cell 1 immunity और रेगुलेटरी T cells, तो ये हो सकता है। अब मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक एस्थमा की स्टेप वाइज थेरेपी है, वो समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह से आपको आएगा नहीं कि कैसे ट्रीट करना है आपको। तो अब ये देखें, ये बहुत अच्छी सी एक चार्ट बना हुआ है इसमें स्टेप वाइज अप्रोच का टू एस्थमा थेरेपी। अब देखें इसमें एस्थमा को हम डिवाइड करते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, माइल्ड मॉडरेट परसिस्टेंट, सीवियर परसिस्टेंट एंड वेरी सीवियर परसिस्टेंट में। तो अगर किसी को माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा है उसका मतलब है कि उसको सिर्फ हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा ब्रोंकोडायलेटर जो उसके पास इनहेलर है सैल्ब्यूटामॉल का वो लेना नहीं पड़ता है उसको। तो उसको हम सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट जब उसको ज़रूरत है ले ले। ज़रूरत का मतलब ये है कि हफ्ते में उसको 3 दफ़ा से कम ज़रूरत पड़नी चाहिए। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो उसका मतलब है कि उसको क्रॉनिक ट्रीटमेंट की या कंट्रोलर थेरेपी की ज़रूरत है। तो फिर माइल्ड परसिस्टेंट में आ जाएं, यानी कि 3 दफ़ा से ज़्यादा हफ्ते में अगर उसको अपना शॉर्ट एक्टिंग लेना पड़ रहा है बीटा-2 एगोनिस्ट इनहेलर, तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइल्ड परसिस्टेंट में लो डोजेज में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिला देंगे। ठीक है, अब मॉडरेट परसिस्टेंट हो गया, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, लो डोज ही रखेंगे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, उसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट का इनहेलर मिला देंगे, यानी कि सेलमेट्रॉल या फॉर्मिट्रॉल उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एंटील्यूकोट्राइन्स भी दे सकते हैं, यानी कि मॉन्टीलुकास या ज़िफरलुकस भी दे सकते हैं। अब सीवियर परसिस्टेंट अगर हो रहा है अस्थमा किसी को, तो उसमें हाई डोज कर देंगे हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की और उसके साथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे। ठीक है, और वेरी सीवियर परसिस्टेंट में हाई डोजेज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट एंड ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी जो मैंने बताया था कि 5 से 10 दिन हम एक शॉर्ट कोर्स प्रेडनिसोलोन का दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ट्रीट करना है। अब एक इसमें होता है कि एस्थमा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपको सीवियर एक्यूट एस्थमा की पहचान ना और डायग्नोज ना कर सकें, उसको ट्रीट ना कर सकें। ज़ाहिर है पेशेंट ज़्यादातर तो एक्यूट सीवियर एस्थमा ही में इमरजेंसी में आएगा ना, तो उसमें क्या क्या हो रहा है जिससे आप उसको डायग्नोज कर लेंगे, इंक्रीजिंग चेस्ट टाइटनेस, इंक्रीजिंग डिस्निया एंड वीजिंग, ब्रेथलेसनेस इतनी होगी कि पेशेंट
कैन नॉट कंप्लीट फुल सेंटेंसेस, अगर आप उससे कोई बात करेंगे तो पूरी बात नहीं बता सकेगा। साइनोसिस हो रहा होगा उसको, ठीक है, पेरिफेरल। इंक्रीज्ड वेंटिलेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो रही होगी। टैकीकार्डिया होगा, आप देखेंगे 110 120 उसका पल्स रेट है। पल्सस पैराडॉक्सस भी मिल सकती है। अब फॉल इन पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, अगर उसके पास स्पायरोमीटर है तो उससे आप करके देख रहे हैं, उसमें फॉल होगा। आर्टीरियल ब्लड गैसेस शो हाइपोक्सीमिया, ज़ाहिर है ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है। एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ब्रीदिंग हो रही होगी कि भाई ऑक्सीजन अंदर आया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकल रही है, ठीक है। 10 राइजिंग PCO2, अब कम होगी ना, अगर PCO2 बढ़ने लगे, सोचें, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन इसका मतलब है पेशेंट एग्जॉस्ट हो गया, उसके मसल्स काम ही नहीं कर रहे। राइजिंग PCO2 या नॉर्मल PCO2 भी इंडिकेट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। पहले ही आप समझ जाएं, अगर आपने आर्टीरियल ब्लड गैसेस में देखा PCO2 बढ़ रही है तो उसका मतलब है रिक्वायर इमीडिएट मॉनिटरिंग एंड थेरेपी। थेरेपी क्या है? क्या? इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, फॉरन वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। 11 चेस्ट रेडियोग्राफ नॉट इन्फॉर्मेटिव, जाहिर है उसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको अनलेस कि उस पेशेंट को नीमोथोरेक्स हो चुका है या निमोनिया हुआ है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक्यूट सीवियर एस्थमा में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन थेरेपी देंगे टू अचीव ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 90% हो जाए। नंबर 2, हाई डोजेज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ईदर बाय इनहेलर और मीटर डोज इनहेलर विद स्पेसर, नेबुलाइजर या इनहेलर से दे देंगे और जल्दी जल्दी देंगे आप। नेबुलाइज्ड एंटीकोलिनर्जिक इफ नो इफेक्ट फ्रॉम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है वो दे देंगे इनहेलर। इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, वो ज़ाहिर ज़रूरी है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली और वाया नेबुलाइजर, बट नॉट रूटीनली रिकमेंड, हम तो नहीं दे रहे होते हैं। व्हेन PCO2 इज राइजिंग, intubation and mechanical ventilation is immediately required to save the patient's life, ठीक है। तो ये हमारा जी एस्थमा कंप्लीट हो गया। अब इसके मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस बनाए हैं, ये आप देखिए। What is asthma and its pathogenesis? Number 2, what are the signs and symptoms of asthma and how do you diagnose it? Number 3, what are the findings of pulmonary function test in asthma? ये आपको आना चाहिए। Number 4, what is stepwise therapy of asthma? Number 5, how do you diagnose and treat acute severe asthma? और ये सारा कुछ हमने एस्थमा में कंप्लीट कर लिया है और आपको इंशाल्लाह कोई भी सिनेरियो आएगा, कुछ भी आएगा, आप कर लेंगे अगर आपने ये अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और इसको बुक में से पढ़िए और मेरे असाइनमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह यू विल बी वेरी गुड इन इट। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।